Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So the topic of today's video is 125 solved MCQs on research methods in psychology, and where there will be a need of explanation of MCQs or statements, I will explain there too. So without any further delay, let's move towards the MCQs. So the number one MCQ is statistical procedure used in describing the properties of samples or of population where the complete population data are available are referred to as inferential statistics, descriptive procedures, descriptive statistics, or parameters. The right option is option C, descriptive statistics. Descriptive statistics overall पॉपुलेशन और सैंपल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है ऑन द प्रेजेंट डाटा. सो ओवरऑल इसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहेंगे. Number 2. Statistical procedure used in drawing of inferences about the properties of population from the sample data are frequently referred as inferential statistics. Inferential statistics में सबसे पहले inferences का मीनिंग पता होना चाहिए. Inferences mean to make conclusion on the basis of logic and reasoning. लॉजिक एंड रीजनिंग की बेस पे जब हम ओवरऑल पॉपुलेशन के सैंपल पे एक पर्टिकुलर इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, उनके बारे में लॉजिक्स या रीजनिंग ड्रॉ करते हैं, तो वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा. Number 3. Dash is an experimental design where different participants are used in each condition of the independent variable. एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जिसमें डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को यूटिलाइज किया जाता है हर कंडीशन के लिए. So the right option is option D, both B and C. It's mean इस मैयर को या इस डिज़ाइन को इंडिपेंडेंट मैयर डिज़ाइन भी कहा जाता है और बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन भी कहा जाता है, जिसमें डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हर कंडीशन के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं. Number 4. An experimental design where the same participants take part in each condition of the independent variable. यहाँ पे है कि अब सेम पार्टिसिपेंट्स हर कंडीशन के लिए participate करते हैं. This means that each condition of the experiment includes the same group of participants. So here the right option is option D, all of these. क्योंकि इस experimental design को repeated measure design भी कहते हैं, within group design भी कहते हैं और within subject design भी कहते हैं. So कोई भी name जो है आ सकता है. So आपको clear होना चाहिए कि इसके 3 names हैं और इसके अंदर जो है वो same participants utilize होते हैं हर condition के लिए. Number 5. An experimental design where pair of participants are matched in terms of key variables such as age or socioeconomic status. One member of each pair is then placed into experimental group and other member into control group. So the right option is option D, matched pair design. मैच पेयर डिज़ाइन के अंदर बेसिकली क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स को मैच किया जाता है, यानी कि उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी बेसिस पे उनके पेयर्स बनाए जाते हैं और फिर उन दोनों को जो है वो एक को कंट्रोल ग्रुप में और एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में असाइन किया जाता है. Number 6. Nominal scales are also known as dash without any quantitative value. Option A, labels, option B, category, option C, names, and option D, numeric value. The right option is option A, labels. Number 7. In dash scale, order of value is very important. The right option is option A, ordinal scale. So सबसे पहले measurement scales की अगर हम बात करें तो there are 4 types of measurement scale, जिसमें number 1 पे है ordinal, number 2 nominal, number 3 है interval and number 4 है ratio scale. So there are 4 types of measurement scales. Weight, length, time and speed are some variables which can be measured on option A, ratio scale, option B, interval scale, option C, nominal scale, and option D, ordinal scale. So the right option is option A, ratio scale. हम ratio scale के through जो है weight, length, time and speed को measure करते हैं. Number 9. Customer satisfactory survey is an example of dash scale. So it's ordinal scale जहाँ पे overall satisfaction के बारे में कस्टमर से पूछा जाता है कि वो प्रोडक्ट जो है उनको किस तरह का लगा है, सेटिस्फैक्ट्री है, वेरी सेटिस्फैक्ट्री है या फिर डिससेटिस्फैक्ट्री. ओवरऑल ऑर्डर में जो है ऑप्शन जो है उनके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं. सो इस तरह से उनकी ओपिनियंस लिए जाते हैं. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी.
Number 10. Scales where the absolute 0 point is unknown are known as option A interval scale. याद रखना है कि इंटरवल स्केल्स के अंदर एब्सोल्यूट 0 पॉइंट जो है अननोन होता है. एग्जैक्टली जीरो से बिलो भी वैल्यूज जो है वो फॉल करती हैं, लाई करती हैं. सो हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट एब्सोल्यूट जीरो जो है वो इसके अंदर लाई करता है. Number 11. Gender like male, female and colors like brown, white and black are example of which scale? So these are example of nominal scales. Nominal scales को naming scale भी कहा जाता है, जिसमें फोकस जो है वो क्लासिफिकेशन पर होता है, ऑर्डर पे नहीं होता. जैसे कि अगर जेंडर को असेस करना है तो हम कह सकते हैं कि एक नॉमिनल स्केल यूटिलाइज किया जाएगा ताकि एक पॉपुलेशन में असेस किया जाए कि मेल ज़्यादा हैं या फीमेल्स, और उनकी रिलीजियस एफिलिएशन क्या है, और इसके साथ साथ उनका हेयर कलर क्या है. सो इस तरह की क्लासिफिकेशन को नॉमिनल स्केल के अंदर कंसिडर करेंगे. नंबर 12. द स्केल वेयर एब्सोल्यूट 0 पॉइंट इज नोन. ऐसा स्केल जिसमें एब्सोल्यूट 0 पॉइंट जो है वो नोन होता है उसको पॉपुलरली क्या कहा जाता है? इट्स बेसिकली रेशियो स्केल. इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं लेंथ, हाइट, वेट, टाइम. सो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं इनके अंदर एब्सोल्यूट 0 हमेशा से नोन होगा, यानी बिलो 0 कोई भी वैल्यूज जो हैं वो फॉल नहीं करेंगी. Number 13. Dash also measures central tendency, standard deviation, coefficient of variation. So रेशियो स्केल्स जो है वो मेजर कर सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को. Number 14. Sex, nationality, occupation, religion, marital status are example of qualitative variables. क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड को असेस नहीं किया जा सकता, सो इनको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स नहीं कह सकते. Number 15. Which variable is unmeasurable with the scale and as such is unexpressible in magnitude? So it is qualitative variable. Number 16. A variable which can theoretically assume all values within a certain interval and as such are divisible into smaller and smaller fractional units is known as continuous variable. Continuous variable के अंदर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है जिसमें वो वैल्यू जो है वो डिविजिबल होगी स्मॉलर यूनिट्स के साथ या स्मॉलर से स्मॉलर फ्रैक्शंस के साथ. और इसको कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर हमेशा क्वांटिटेटिव डाटा आता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हाइट को मेजर करना है या फिर वेट को मेजर करना है, जो इसकी जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा कंटिन्यूस होंगी. सो इस लिहाज से हाइट एंड वेट आर कंटिन्यूस वेरिएबल्स. Number 17. When the values of variables differ from one another by definite amount, it is called discrete variables. Discrete variables को आपने इस तरह याद रखना है कि इसके अंदर जो डाटा होगा वो नॉन कंटिन्यूस होगा, यानी कि फिक्स डाटा होगा. और इसके साथ साथ हम इसकी एग्जांपल एक कंसिडर करते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटेड अ हॉस्पिटल पर वीक, या फिर अमाउंट ऑफ मिल्क इन अ पर्टिकुलर स्टोर. सो यहाँ पे जो डाटा होगा वो हमारे पास एक फिक्स्ड आएगा, वो कंटिन्यूस नहीं होगा. Number 18. Generally, measurement of a discrete variable are obtained by counting. Number 19. When the classification is done with respect to one attribute which is dichotomous in nature is known as simple classification. और dichotomous की example हम gender की ले सकते हैं जिसमें male और female आते हैं. Number 20. A table which contains data on two characteristics is called a bivariate table. Number 21. The related facts or observations which are grouped into classes or categories are known as classification. Number 22. When the data are depicted pictorially or graphically, we call it graphical representation of data. Number 23. A set of rectangles whose arcs were in proportion to class frequencies is known as histogram. हिस्टोग्राम की अगर हम बात करें तो जो डाटा है वो बार्स की फॉर्म में या रेक्टेंगल्स की फॉर्म में शो किया जाता है, जिसमें वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज होती हैं और एक्स एक्सिस पे बेसिकली इंटरवल्स होते हैं जो शो कर रहे होते हैं कि डाटा की रेंज क्या है और कहाँ से कहाँ तक डाटा लाई कर रहा है. और इसी तरह जो हाईएस्ट बार होता है वो इंडिकेट कर रहा होता है कि हाईएस्ट वैल्यू कहाँ लाई करती है. सो ओवरऑल जब हम रेक्टेंगल्स की फॉर्म में शो करेंगे डाटा को या डाटा डिस्ट्रीब्यूशन को तो वो हिस्टोग्राम कहलाएगा. Number 24. If a curve has a long tail on right side, it is called a positive skewed curve.
जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे जो टेल है वो राइट साइड पे जा रही है, सो इट्स अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. And if a curve having a long tail on left side, it is called a negatively skewed curve या negatively skewed distribution, जिसमें long tail जो है वो left side पे जा रही होगी. Number 26, when the classification is made according to similarity or differences observed with respect to some characteristics or properties, it is in nominal scale. Nominal scale को याद रखना है, naming scale भी कहा जाता है, जिसमें labels assign किए होते हैं डाटा को विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू, जिसमें हम जेंडर की बात कर सकते हैं, मेल या फीमेल आते हैं. इसी तरह हम रिलीजियस प्रेफरेंसेस पता कर सकते हैं, रिलीजन क्या है किसी का, तो ओवरऑल हमने ऑप्शंस जो हैं उनको दिए होंगे जिसमें से वो अपना रिलीजन जो है वो हाईलाइट करते हैं. इसके अलावा कंट्री की बात की जाए या फिर लाइक्स एंड डिसलाइक्स या आपके फेवरेट हॉबीज़ क्या हैं, सो ओवरऑल ऐसा डाटा जिसके अंदर आपने क्वालिटेटिवली एक चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, वो नॉमिनल स्केल के अंदर कंसिडर किया जाएगा. Number 27, who stated that a test is valid if it measures what it claims to measure? So it was said by Cayley, और according to Cayley एक टेस्ट को तभी हम वैलिड कह सकते हैं जब उसके अंदर के आइटम्स जो हैं वो उस टेस्ट को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, और कैले ने ही वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था. Number 28, if there is a causal relationship between independent and dependent variable, it indicates an experiment has high validity. Number 29, extent to which the result of a study can be generalized to other setting is known as reliability. Reliability को आप replication से याद रखें कि हमेशा एक रिसर्च की रिलायबिलिटी तभी होगी जब वो रेप्लिकेबल होगी, यानी वो किसी और सेटिंग में भी अप्लाई हो और उसके रिजल्ट्स भी उसी तरह के आए, सो उसको जनरलाइज किया जा सके अदर सेटिंग्स में भी. Number 30, when group of interconnected facts are joined together, it is known as scientific theory. Number 31, a type of validity refers to extent which a test captures a specific theoretical construct or trait. So it is known as construct validity. Construct validity में ये एनालाइज किया जाता है कि एक जो न्यू टेस्ट कंस्ट्रक्ट हुआ है उसके लिंक्ड क्या है, उसकी थियोरेटिकल बेसिस क्या है प्रीवियस रिसर्चेस के साथ. जिसमें हम अगर एग्जांपल लेते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट का, तो इंटेलिजेंस टेस्ट जब भी कोई बनाएगा तो उसके पीछे एक बेस होगी, यानी कि थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस में से कोई एक थियरी होगी या फिर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस होगा. सो ओवरऑल इस वैलिडिटी में ये एनालाइज किया जाता है कि एक टेस्ट के अंदर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क कितना ज़्यादा प्रेजेंट है और इसके साथ साथ फ्यूचर प्रिडिक्शन जो है वो कितना वो टेस्ट कर सकता है, उसके टेस्ट के जो स्कोर्स हैं क्या वो इंटरप्रिटेशन और ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशनल टर्म्स हैं उसके साथ कितना ज़्यादा लिंक्ड हैं. सो ओवरऑल थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ जो है लिंक्ड को असेस किया जाता है कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी में, और जितना ज़्यादा एक टेस्ट की कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी होगी उतना ज़्यादा ही वो टेस्ट वैलिड होगा. Number 32, if the new test is validated by comparison with the currently existing criterion, we will say we assessing concurrent validity. Concurrent validity नेम से ही समझ आ रहा है कि ये रिलेट कर रहा है करंट सिचुएशन से. सो जब भी एक न्यू टेस्ट बनेगा एग्जिस्टिंग टेस्ट के साथ उसका कंपैरिजन किया जाएगा कि क्या ये कंपैरेबल है, क्या इसके स्कोर्स और इसके इंटरप्रिटेशंस लिंक्ड हैं उस करंट टेस्ट के साथ जो कि पहले यूटिलाइज हो रहा था. जैसे कि हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं, न्यू इंटेलिजेंस टेस्ट को कंपेयर किया जाएगा एग्जिस्टिंग टेस्ट के साथ ताकि ओवरऑल उसकी वैलिडिटी को असेस किया जा सके. Number 33, predictive validity and concurrent validity are subtypes of which validity? So predictive validity and concurrent validity are the types of criterion validity. Number 34, SAT test is an example of which validity test? So it is an example of predictive validity test, यानी कि ये सब टाइप है क्राइटेरियन वैलिडिटी की. और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी टेस्ट के अकॉर्डिंगली यूजुअली टेस्ट ऐसे टेस्ट जो कि आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं, यानी कि आपके प्रीवियस रिकॉर्ड की बेस पे फ्यूचर प्रेडिक्शन जब की जाएगी तो वो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में आएगा, जिसमें सैट की एग्जांपल आ सकती है, जीआरई की एग्जांपल आ सकती है. Number 35, the degree to which the results of the research are consistent and repeatable is known as reliability.
Number 36. Type of reliability that measures the consistency of results when you repeat the same test on the same sample at a different point in time. So यहाँ पे क्या है, एक टेस्ट को different point of time पर दोबारा एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी को असेस किया जा सके. सो इट इज़ टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. Number 37. A type of reliability which measures the correlation between two equivalent versions of test. You use it when you have two different assessment tools or set of questions designed to measure the same thing. इसमें equivalent version of test जो होते हैं, two equivalent version of test present होते हैं और उन दोनों के दरमियान correlation को चेक करना होता है कि क्या वाकई ही एक ही construct पे या एक ही टॉपिक पे जो टेस्ट बनाई गई है क्या दोनों में उनके आइटम्स सेम हैं, क्या ओवरऑल परसेंटेज जो है वो दोनों आइटम्स की दोनों वर्जन्स में प्रेजेंट है या नहीं. सो ओवरऑल कोरिलेशन चेक करने के लिए इस रिलायबिलिटी को यूटिलाइज किया जाता है जिसका नाम है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी. नंबर 38. डैश मेजर्स द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट पीपल ऑब्जर्विंग और असेसिंग द सेम थिंग. ऑप्शन ए इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, option B inter-observer, option C test-retest and option D both A and B. The right option is option D both A and B. So inter-rater या फिर inter-observer reliability overall measure करती है कि एक researcher या फिर observer दूसरे researcher observer के साथ कितना agree करते हैं किसी भी particular test के items पे कि वो overall reliable हैं या नहीं हैं. So इसमें एग्रीमेंट देखा जाता है बिटवीन ऑब्जर्वर्स ताकि ओवरऑल कंस्ट्रक्ट को असेस किया जा सके कि वो कितना ज़्यादा रिलायबल है. नंबर 39. डैश असेस द कोरिलेशन बिटवीन मल्टीपल आइटम्स इन अ टेस्ट दैट आर इंटेंडेड टू मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट. ओवरऑल एक कंस्ट्रक्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं उनके दरमियान की कोरिलेशन यानी कोरिलेशन बिटवीन आइटम्स जब असेस की जाती है कि ओवरऑल एक कंस्ट्रक्ट को जो आइटम्स प्रेजेंट कर रहे हैं क्या वो आपस में कोरिलेटेड हैं या नहीं, उसको इंटरनल कंसिस्टेंसी कहा जाता है जब आइटम्स के दरमियान की कोरिलेशन को असेस किया जाता है. नंबर 40. हाउ वी कैन असेस इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ आइटम्स. ऑप्शन ए थ्रू स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी एवरेज इंटर आइटम रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी क्रॉनबेक्स अल्फा रिलायबिलिटी एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. The right option is option D both A and B. अगर हम इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात करें तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के ज़रिए या फिर इंटर आइटम रिलायबिलिटी के ज़रिए हम इंटरनल कंसिस्टेंसी को असेस कर सकते हैं कि ओवरऑल आइटम्स के दरमियान कितनी कंसिस्टेंसी है या फिर कोरिलेशन है. स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही कंस्ट्रक्ट को या फिर एक ही टेस्ट को स्प्लिट कर दिया जाता है टू पार्ट्स में और वो स्टूडेंट्स को दिया जाता है और एट द एंड दोनों के रिजल्ट्स को असेस किया जाता है कि वो कोरिलेटेड हैं या इनके अंदर इंटरनल कंसिस्टेंसी है या नहीं. इसी तरह अगर हम इंटर आइटम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो इंटर आइटम रिलायबिलिटी में आइटम्स के दरमियान की कंसिस्टेंसी को असेस किया जाता है और जितने भी पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं उनके अंदर मल्टीपल आइटम्स प्रेजेंट होते हैं और ओवरऑल वो किसी एक कंस्ट्रक्ट को या फिर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्ट को असेस कर रहे होते हैं. सो टोटल जो स्कोर होता है वो हर कंस्ट्रक्ट का सम अप किया जाता है और उनके दरमियान आइटम्स के दरमियान की कंसिस्टेंसी फाइंड आउट की जाती है. जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं उनके अंदर इंटर आइटम रिलायबिलिटी जो होती है वो हाई होती है. नंबर 41. व्हेन द पीपल आर क्लासिफाइड लाइक ब्लू आइड, ब्लैक आइड, ब्राउन आइड एक्सेट्रा, दे आर इन नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल के अंदर लेवल्स जो हैं वो असाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. सो यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हमने डिफरेंट ह्यूमंस को असाइन कर दिए हैं लेबल्स. सो ये नॉमिनल स्केल के अंदर आएगा. नंबर 42. रैंकिंग ऑर्डर और मेरिट पोजीशन आर इन्वॉल्व इन ऑर्डिनल स्केल. ऑर्डिनल स्केल में ऑर्डर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है और ज़्यादातर नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ इसमें होती हैं. जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे की जिसमें प्रोडक्ट के बारे में एक कस्टमर जो है वो अपनी राय देता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री है, डिससेटिस्फैक्ट्री है, न्यूट्रल है या फिर हाईली सेटिस्फैक्ट्री है. इसके अलावा जैसे हैप्पीनेस है, डिस्कम्फर्ट है, ओवरऑल हम कह दें सेटिस्फैक्शन है, ये सारी जो टर्म्स हैं ये
ऑर्डिनल स्केल के अंदर आएंगी क्योंकि इसमें नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं, यानी इनको नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ हम कह सकते हैं। Number 43. Rank order or coefficient of correlation can be easily calculated when the data are in ordinal scale. Number 44. Centigrade thermometers and score on intelligence test come under ratio scale. Ratio scale में absolute zero known होता है, यानी कि zero से above values जो हैं वो lie करती हैं, below zero कोई values exist नहीं करती ratio scale में। सो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो ज़ीरो से ऑनवर्ड जो है हम असेस कर सकते हैं कि एक पर्सन की ओवरऑल इंटेलिजेंस क्या है या इंटेलिजेंस लेवल क्या है। सो इस लिहाज से सेंटीग्रेड थर्मोमीटर्स और इंटेलिजेंस टेस्ट के स्कोर्स जो हैं वो रेशियो स्केल के अंडर आते हैं। नंबर 45. इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन वी कम अक्रॉस मेजरमेंट डाटा हैवीली डिपेंडेंट अपॉन इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे डोंट हैव एब्सोल्यूट ज़ीरो। और हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि जो कोरिलेशन, अगर हमने किसी भी वेरिएबल्स के दरमियान, टू वेरिएबल्स के दरमियान अगर हमने कोरिलेशन को असेस करना है तो वो उसकी वैल्यू -1 to +1 लाई करेगी, यानी बिलो ज़ीरो भी वैल्यूज़ लाई करती हैं। सो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में डाटा जो होता है वो यूजुअली इंटरवल स्केल की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। Number 46. Which scale has true zero point and constitutes the highest type of scale in terms of measurement? It is ratio scale, जिसमें true zero point जो है वो known होता है और overall measurement के accordingly भी ये सबसे ज़्यादा highest type of scale कहलाया जाता है। Number 47. Group data or frequency distribution may be represented graphically through all of above. अगर हम डाटा, ऐसा डाटा जो ग्रुप डाटा है उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं वो हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 48. Which one of the simplest but most useful measure of central tendency? It is arithmetic mean. Arithmetic mean को बहुत simplest और useful measure of central tendency कहा जाता है। Number 49. What is the mean of the following ungrouped data? Scores are 3, 2, 1, 4, 5. सबसे पहले डाटा को ascending order में अरेंज किया और सम कर दिया, उसके बाद डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स के साथ जो कि 5 हैं। सो 15 डिवाइडेड बाय 5, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3। नंबर 50. द पॉइंट ऑन द स्कोर स्केल विच 50% ऑफ द स्कोर्स फॉल इज कॉल्ड मीडियन। 50% स्कोर जो होगा बेसिकली उसको मीडियन कहा जाता है, आप इसको मीडियम से याद कर लें। नंबर 51. द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग अनग्रुप्ड डाटा इज, so the scores are 7, 8, 5, 0, 3, 4, 6. The right option is option A 5. So सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अरेंज कर दिया और ये हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में हमेशा जो मिड में वैल्यू होगी वही मीडियन कहलाएगी और यहाँ पे मिडल वैल्यू जो है वो 5 है। सो द राइट ऑप्शन इज 5। इसी तरह अगर डाटा इवन होता है सो इवन नंबर के लिए फार्मूला अप्लाई किया जाता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 और फिर जो है वो मीडियन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नंबर 52. द स्कोर्स विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड मोड। नंबर 53. द मीन ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24 एंड मीडियन इज 28. सो व्हाट विल बी द मोड? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 36। इसके लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है 3 मीडियन -2 मीन। 3 को मल्टीप्लाई किया जाता है मीडियन वैल्यू के साथ जो कि 28 है और माइनस का साइन फिर 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा मीन की वैल्यू से जो कि 24 है और इसी तरह मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया जाता है और फिर राइट आंसर जो है हमारे पास आ जाता है, यानी मोड हमारे पास आ जाता है। नंबर 54. Which measure of central tendency has the greatest stability? So it is mean which has the greatest stability. Number 55. When the exact midpoint of the distribution is desired, the best measure of central tendency is median. Number 56. Where a quick and approximate measure of central tendency is desired, we generally compute mode. क्योंकि मोड डाटा के अंदर ऑब्वियस होता है क्योंकि ये रिपीटेटिव वैल्यूज़ होती हैं, सो इस लिहाज से अगर क्विक एंड अप्रॉक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए सो हम मोड को कंप्यूट कर सकते हैं। Number 57. When data are grouped into frequency distribution, the midpoint of that interval which contains the largest frequency is called mode.
When the scores are distributed symmetrically around a central point and the distribution is not badly skewed, we generally compute mean. ओवरऑल जब डाटा की रिप्रेजेंटेशन जो है सिमेट्रिकल होती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बैडली स्क्यूड नहीं होती तो हम मीन कंप्यूट करते हैं. Number 59. Cumulative percentage frequency curve is otherwise known as ogive. Number 60. The exact limit of the class interval 20 to 25 is. क्लास इंटरवल की एग्जैक्ट लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए अपर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करने पड़ते हैं और लोअर क्लास लिमिट से में 0.5 ऐड करने पड़ते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 19.5 to 25.5. Number 61. When the group is made up of individuals of nearly the same ability, it is called homogeneous group. Number 62. The interval between the highest and lowest score is popularly known as range. Hi, it's a reminder before moving on to the next slide, please subscribe the channel as YouTube Analytics has showed that 49.8% viewers don't subscribe the channel and they just watch videos. So first of all, show your support, go and subscribe the channel and then continue the video. Number 63. If the highest score is 89 and the lowest score is 19, the range is 70. रेंज के लिए हमें हाईएस्ट स्कोर में से लोवेस्ट स्कोर को माइनस करना यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है तो हम रेंज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो 89 minus 19, the answer is 70 and 70 is range. Number 64. Q2 is also known as median. Number 65. The average deviation is otherwise known as mean deviation. Number 66. The most stable index of variability is standard deviation. Number 67. When the data are too scattered to justify the computation of more precise measure of variability, we generally use range. Number 68. A variable that is correlated with the independent variable and thus can be responsible for the effect in questions is known as confounded variable. ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोरिलेट कर जाता है और उसके इफेक्ट्स भी होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे तो उसे कंफाउंडेड वेरिएबल कहा जाता है. Number 69. When we assign numbers to objects, events or mental phenomena, we obtain scale. Number 70. Interval scale contains equally appearing units. Equally appearing unit एक टेक्निक है जो थर्स्टन ने यूटिलाइज की थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजरमेंट एटीट्यूड मेजरमेंट स्केल, जिसके अकॉर्डिंगली एक पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ता है जिसमें जजेस जो हैं वो असेस करते हैं हर स्टेटमेंट को और जो जजेस ओवरऑल जिन स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करते हैं वैल्यूज देते हैं हाई प्रायोरिटी देते हैं वही सेलेक्ट होती हैं एक स्केल के लिए और जितनी ज़्यादा आइटम्स या फिर स्टेटमेंट्स सेलेक्ट होती हैं वही टेस्ट में इंक्लूड की जाती हैं और ओवरऑल जजेस के अकॉर्डिंगली एक एजम्पशन बनाई जाती है कि हर स्टेटमेंट जो है वो डिस्टेंट है डिफरेंट है और ओवरऑल एक एटीट्यूड को असेस कर रही है. Number 71. Dash scale have absolute 0, so ratio scale have absolute 0. Number 72. Method of rating or method of successive categories is otherwise known as method of graded dichotomies. Number 73. The first rating scale was developed by Galton in 1883. Number 74. The method of ranking was formerly known as the method of order of merit. Number 75. The method of paired comparison was introduced by Cohen. Number 76. The term mental test was first employed by Cattell. Number 77. From the following, who is the first scientist to undertake systematic and statistical investigation of individuals' differences? Francis Galton. Number 78. A research study in realistic situation in which one or more independent variables are manipulated by the experimenter under a carefully controlled conditions as the situation permits is known as a field experiment. एक experiment के अंदर ही एक researcher independent variable को manipulate कर सकता है और उसके results या उसके effects जो हैं वो dependent variable पे
असेस कर सकता है या चेक कर सकता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Number 79. Which type of research is approached through the methods of personal interviews, mailed questionnaires, and personal discussions beside indirect oral investigation? So it is survey research. Number 80. A research through launching of a direct action with objective of obtaining workable solutions to the given problem is known as action research. एक direct action जब स्टार्ट किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए और वर्केबल सॉल्यूशंस जो हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, तो वो एक्शन रिसर्च जो है वो यूटिलाइज की जाती है. नंबर 81. A proposition which can be put to determine its validity is called hypothesis. Number 82. The least noticeable value of a stimulus is called stimulus threshold. Number 83. Which method is regarded as the most preferred method of psychology? Experimental method. क्योंकि साइकोलॉजी का स्टार्ट ही एक्सपेरिमेंटल मेथड से हुआ है और ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, इस लिहाज से ही बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड मेथड कंसिडर किया जाता है साइकोलॉजी में. Number 84. I bet this will happen if I do this. Design of experimentation otherwise known as hypothesis testing. हाइपोथेसिस में यूजुअली हम पहले से ही assumptions या predictions जो हैं वो सेट कर देते हैं कि इस तरह के रिजल्ट्स होंगे. सो ओवरऑल अगर सिंपल टर्म्स में अगर हम डिफाइन करें तो हम इसी तरह से इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये सिचुएशन फ्यूचर में होगी. आई बेट दिस विल हैपन. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Number 85. Changes in dependent variable are due to independent variable and influence of independent variables is the same for all subjects and doesn't change during experimental period is the main objective of experimental control. एक experimental settings के अंदर यही फोकस किया जाता है कि जो चेंजिंग्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही हों और ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे अफेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो. सो एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल बेसिकली यही होगा कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से सामने आए और इसमें कोई भी कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व ना हो. नंबर 86. फील्ड स्टडी मेथड इज मेथड ऑफ naturalistic observation. Number 87. In studying the public opinion, survey research is applied. Number 88. Which scale represents the lowest level of measurement and imparts the least information? It is nominal scale. अगर हम statistical point of view से देखें तो ये lowest level ऑफ मेजरमेंट कंसिडर किया जाता है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो ये बहुत ज़्यादा लॉजिकली या न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि ये क्वालिटेटिव है ज़्यादा और इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो ऐड नहीं होती. नंबर 89. विच स्केल हैज़ एन एब्सोल्यूट जीरो एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन? इट इज़ रेशियो स्केल. नंबर 90. द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन मार्केटिंग रिसर्चेस एंड इलेक्शन पोल इज कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें ओवरऑल सैम्पल जो है सेम प्रोपोर्शन होती है सैम्पल की, अगर उसको कंपेयर किया जाए पॉपुलेशन के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स जो हैं वो एक पॉपुलेशन से मैच कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कंसिडर की जाती है. नंबर 91. आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल्स आर अदरवाइज नोन एज रैंक ऑर्डर स्केल्स. Number 92. The men of medicine of the ancient as well as the modern tribal groups are master in the techniques of suggestions and hypnosis. Number 93. A latest development of applied social psychology which is concerned with the application of psychology in solving the problems of communities of people like village community, the urban community and the social backward community etc. is popularly known as community psychology. Number 94. Naturalistic observations on children are usually possible in a school. क्योंकि एक स्कूल एक ऐसी सेटिंग्स है जिसमें चाइल्ड का या फिर स्टूडेंट का बिहेवियर असेस किया जा सकता है क्लासरूम सेटिंग्स में भी और ओवरऑल ब्रेक टाइम में वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, सोशल रिलेशनशिप्स उसके किस तरह से हैं, वो एक स्कूल सेटिंग्स में ही असेस किए जा सकते हैं. Number 95. Projective test is a non-naturalistic observation.
Number 96. The concept which refers to consistency of scores obtained by the same person when re-examined with the same test on the different occasion is known as reliability. Number 97. Experimental analysis enable us to discern lawful relationship between antecedents and consequents involved in behavior. Number 98. Experimenter in psychology firmly believes that white children are inherently superior to the black children. Naturally, he would never think of home environment as an explanation. So this is an obvious example of experimenter's biasness. Number 99. Regulating the relevant variable is called experimental control. Number 100. The simplest experimental method is that in which the experimenter manipulates only one variable. Number 101. When more than one independent variable works in an experimental situation, it is called none of the above, because experimental methods के further types जो हैं यहाँ पे explain या mention नहीं हुई हुई. So the right option is option D. Number 102. List of all units in population are called sampling frame. Number 103. Any numeric value calculated from sample data is called statistic. Sample data के लिए जो value होगी उसको हमेशा से statistic कहेंगे. Number 104. The sample data is subset of population. Number 105. Any numeric value computed from the population is called parameter. अगर हम सैंपल की बात करेंगे तो सैंपल की जो वैल्यू होगी न्यूमेरिक वो स्टैटिस्टिक कहलाएगी और पॉपुलेशन की न्यूमेरिक वैल्यू पैरामीटर कहलाएगी. Number 106. In random sampling, the probability of selecting item from the population is known. हमेशा रैंडम सैम्पलिंग में ओवरऑल हर पर्सन जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है और प्रोबेबिलिटी जो है वो नोन होती है कि पॉपुलेशन के अंदर से जो हमने सैंपल उठाया है वो सिग्निफिकेंट है या फिर रैंडम है. Number 107. Snowball sampling can help the researcher to option A. Assess deviant population, option B. Assess hidden population, option C. Overcome the problem of not having an accessible sampling frame, and option D. All of these. And the right option is option D. All of these. Number 108. Which of the following is non-probability sampling? Systematic, stratified random sampling, quota sampling, or simple random sampling? So the non-probability sampling technique is quota sampling. Number 109. The standard error is the statistical measure of option A. Normal distribution of score around the sample mean, option B. The extent to which sample is likely to differ from one population mean, option C. Degree to which sample has been accurately stratified, and option D. Clustering of scores at each end of survey scale. So standard error is known as the extent to which the sample is likely to differ from the population mean. So overall ये मेजर करता है कि कितना जो है वो सैंपल डिफर कर रहा है पॉपुलेशन मीन से. Number 110. What effect does increasing the sample size have upon the sampling error? अगर एक सैंपल का साइज इंक्रीज कर दिया जाता है तो सैम्पलिंग एरर पे उसका क्या इफेक्ट आएगा? It basically reduces the sample error. 111. The term data process error refers to option A. Activities related to sampling process, option B. Faulty techniques of coding and managing data, option C. Unavoidable discrepancy between sample and population, option D. Problems in overall research process. The right option is option B. Faulty techniques of coding and managing data. 112. Which of the following is type of non-probability sampling? Option A. Convenience and quota sampling, option B. Purposive sampling, option C. Snowball sampling, and option D. All of these. The right option is option D. All of these. So there are four types of non-probability sampling: convenience, quota, purposive, and snowball sampling. Number 113. Which one of the following is probability sampling technique? Systematic and clustered sampling, option B. Simple random sampling,
option C, clustered sampling, and option D, all of these. So the right option is option D, all of these. So these all are probability sampling techniques. 114. Dash shows how likely a pattern in your data is due to chance. The right option is option D, both A and B. So alpha and significance level दोनों ही टर्म्स यूटिलाइज की जाते हैं ओवरऑल डाटा के पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितना जो है वो डाटा ड्यू टू चांस है और कितना डाटा एक्यूरेट है. 115. If there is a 5% risk of concluding that difference exists when there is no actual difference, what would be the significance value? It would be 0.05. That indicates कि 95% डाटा जो है वो significant है यानी accurate है और जिसमें 5% risk factors है यानी थोड़ा सा वैल्यूज जो है वो स्लाइटली डिफर करेंगी. 116. हाईएस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू इज 0.01. 117. Which is the medium level of significance? 0.05 is the medium level of significance. 118. Which is the lowest level of significance? 0.10 is the lowest level of significance. 119. Dash value means there is a 99% chances of its being true. So it is 0.01 value that indicates that overall the research is 99% true or significant. 120. If a null hypothesis is true and researcher rejects the null hypothesis, what are the outcomes? He has committed type 1 error. 121. If a null hypothesis is false and researcher accepted, what are the results? He has committed type 2 error. Number 122. If a null hypothesis is false and researcher rejected, what are the results? It's a correct decision. जब रिसर्चर जो है वो राइट डिसीजन लेता है, नल हाइपोथेसिस भी फॉल्स होता है और उसको वो रिजेक्ट भी कर देता है, सो ओवरऑल ये करेक्ट डिसीजन कहलाता है. Number 123. Dash has more than one variable or factors in a study. It is factorial design जिसमें overall factors जो हैं वो different conditions variables की बन जाती हैं या फिर more than one variable जो है utilize किया जाता है. Number 124. When neither the experimenter nor the participants know which experimental condition the participants has been assigned to is known as double-blind technique. And the last one is 125. What are the field experiments and natural experiments collectively known as? These are known as quasi experiments. Thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe the channel for the latest updates. Thank you.